A very good morning to all of you. Students of class 5, how are you everyone? I hope all are doing well. So students, how's your exam going on? I think so. That's going on very good. Yes? Okay. Okay students, so now let's take out your GK workbook. There we are going to complete the last revision chapter, which is chapter 37, and today we will read and discuss about the United Nations. Okay, we have some questions or exercises related to our United Nations. So everyone, open your book there. सब लोग book open कीजिए. Page number 42 there. Chapter 37. So all have open. कर लिया सब लोगों ने open अपने book को. All have taken out. Okay, that's good. So start now. Fill in the blanks and enhance your knowledge of the UN. Students, we have to complete just to these blanks and enhance, and then we can enhance our knowledge which are given about the UN, means United Nations. Today we will read so many things, so many interesting and important things about the United Nations. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर. द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, मीन्स जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं यूनाइटेड नेशंस की वो कौन कौन सी होती हैं. ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी यूएन की लैंग्वेजेस होती हैं. सो लेट मी टेल यू. फर्स्ट लैंग्वेज इज अबाउट चाइनीज़, सेकेंड इज अबाउट रशियन which is from Russia, or Chinese from China, and second one is English. Total how many languages are there? First Chinese language, Russian language, English language, and D1 is also there. It is called the French language, which is taken from France, French, Spanish, and it's taken from your Spain country. Spanish language is this. नेक्स्ट आपका है अरेबिक लैंग्वेज. ओके, सो टोटल हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर ऑफ द यूएन? दैट्स कॉल्ड फर्स्ट चाइनीज, सेकेंड रशियन, नेक्स्ट इंग्लिश इज दैट, नेक्स्ट फ्रेंच, स्पेनिश एंड अरेबिक. ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स कंप्लीटेड. देयर आर 6 लैंग्वेजेस. फर्स्ट चाइनीज, सेकेंड रशियन, थर्ड इंग्लिश, नेक्स्ट फ्रेंच, स्पेनिश एंड अरेबिक. क्लियर? Come on the next question. The UN formally came into existence on, so what was the date there? That was 24th October 1945. Okay. The UN formally came into existence on 24th October 1945. Next is this. The UN started with only, मीन्स यूनाइटेड नेशंस स्टार्टेड विद ओनली 50 मेम्बर्स. ओके, जब स्टार्ट किया गया था तो ओनली 50 मेम्बर्स की हेल्प से स्टार्ट किया गया था. इट नाउ हैज़ 193 मेम्बर नेशन, बट टिल नाउ इट हैज़ कलेक्टेड 193 मेम्बर ओके नेशंस. नेक्स्ट इज दिस. द प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ द यूएन आर, मीन्स द प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर. फर्स्ट इज कॉल्ड द जनरल असेंबली, सेकेंड Secretariat, third one the Security Council, fourth one the Trusteeship Council, and fifth one the Economic and Social Council, and sixth one is that the International Court of Justice. So these 3 principal organs of the United Nations are, which are the General Assembly, Secretariat, third one Security Council, Trusteeship Council, Economic and Social Council, International Court of Justice. These are the 6 principal organs of United Nations. Next you have each member nation can send, means each member nation can send how many delegates to the General Assembly? 5. ठीक है, 5 डेलीगेट जो हैं वो मेंबर सेंड कर सकते हैं डेलीगेट्स टू द जनरल असेंबली. नेक्स्ट इज दैट अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज वर्ल्ड पीस. मेन ऑब्जेक्टिव यूएन जो है वो क्या है? वर्ल्ड पीस है.
नेक्स्ट आपका है देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? Yes, total there are 15 members which are in Security Council. Clear? Next is that the headquarters of the UN, means the headquarters of United Nations is at where? Where situated? It is in New York. Where situated? It's in New York. The headquarters of the United States is situated in New York. Next, United Kingdom, France, USA, like Russia and China are the 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. और सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनके जो मेंबर्स हैं 5 परमानेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं एंड दे आर कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड चाइना. क्लियर? नेक्स्ट इज दिस 10th वन. द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द फर्स्ट वुमेन जज. जो पहली वुमेन जज थी इंटरनेशनल कोर्ट of justice is Rosalind Higgins. Okay, Rosalind Higgins. She was the first woman judge of the International Court of Justice. Clear, students? So these are exercises about United Nations, which is called the official languages of the United Nations are Chinese, Russian, English, French, Spanish and Arabics are there. And United Nations formally came into the existence on 24th October 1945. And UN started with only 15 members, but till now it is having 193 member nations. Next, and what were the principal organs of the UN? Yes, there were 6 organs of the UN, United Nations. So first is called the General Assembly, second Secretariat, and third one the Security Council, next Trusteeship Council, Economic and Social Council, and the last one is that called the International Court of Justice. Each member nation can send how many delegates? Yes, 5 delegates. Where? To the General Assembly. नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज. जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूएन का एंड दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड पीस. ठीक है, वर्ल्ड पीस. नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल नाउ. नेक्स्ट इज दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर सिचुएटेड ऑफ द यूएन? दैट्स सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. क्लियर? नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसए एंड रशिया एंड वन मोर कंट्री इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. नेक्स्ट एंड लास्ट वन द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड रोसलिन हिगिंस. ओके, रोसलिन हिगिंस, शी इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके, सो इट वॉज द इंफॉर्मेशन and discussion about the United Nations. Hope students you all have understood. So let's complete and fill your book today and try to understand, learn it and revise it for your test, for your PT second GK test, because you will have the exercises also in this test. Okay, you will have the exercises from the chapter in your PT second also. So let's fill it carefully and learn it well for your test. Okay, so best of luck all of you for your today's exam. Now thank you. Have a nice day.